my dear students. Cambridge International School, the SUA, has always helped you out in learning. And, this situation of this COVID-19 pandemic is still, we don't know till which time it is going to be continue. But we are not let you suffer for your studies. So for your studies, we are always working upon and we always try to give you our best. So for this grade 11 students, I'm here to help you out for economics, and my other co-teachers are also helping you for learning other subjects through e-learning initiative taken by Cambridge International School, the SUA. So as you know, we were doing the previous topic was producers equilibrium. So I told you few things are like that is going to help you out in the future, but that is not part of our syllabus. But I still want to give you some of the things that we have to learn, so that this part, if it will be asked in any of the competitive exams, you are able to clear it. Now let's just give you brief introduction about myself and today's topic. So let's move on to the first slide. So we were doing chapter number 8, producers equilibrium. Subject is economics. Topic is producers equilibrium, grade 11. And my name is Miss Sarita Sani. So my dear students, the topic is same. And now I'm just moving towards the next slide. Now let's move to the next slide. So topics to be covered for today is introduction, as we have already done in the MCR and MR approach, but this is going to be revision part even for you. And even we're going to cover meaning of profit again, then producers equilibrium conditions are there, and we have discussed in detail already with the MR and MC approach that is in our syllabus. Now this approach can be done with the help of total revenue and total cost approach. We also call it as TR and DC approach. So this is also we are able to do it. Now let's move to the first slide for today. That is now we're going to start with the first slide, first topic for today again. So that will be in the chapter number 2. We have already discussed about consumers equilibrium, and we talked about consumer, who is a consumer when he feels he is satisfied and when he is getting maximum satisfaction. So in this chapter we are talking about producer and we are talking about producers equilibrium. So in the consumers equilibrium, we have talked about who is a consumer. So consumer is a person who is consuming the goods or who is using some services. So we call that person as consumers. And next is the customer. There are two words we are using interchangeably. Let me revise you with that even. So we have done customer and consumer. Consumer means who is using it, who is consuming it. So that person is consumer. So he is using any of the things. But customer is the person who is buying the goods and then keep it with him, or we can say he is using some services. We call that person as customer. So customer means जैसे toys है, toys वो consume तो नहीं करेगा, ठीक है. So in that case what we are doing, we are just talking about customer. Customer and consumer दोनों words interchangeably use होते हैं, but there is a difference. So that I have cleared in the last last chapter. Fine. In the second chapter we have already discussed. So it was also in your PT this online quiz exam, so you got that as a syllabus. So I hope that you still remember. So now let's move to the next chapter, that is equilibrium level of producer. So who is a producer? The person who produces something like services, like goods. So in goods, when we talk about, we can grow crops, we can make any of the products, we can manufacture something, fine, and we can even produce some services. So we call that person as producer.
We can do processing in the industries and produce something new. So it also includes, a producer is a person who is also including the manufacturing services. Fine. So manufacturing of goods. So that will be also the part of this. Now इक्विलिब्रियम. सो प्रोड्यूसर को सिंपल चीज है बेटे, जब भी मैं अगर अपने आप को प्रोड्यूसर सोचूं तो उस हिसाब से आई नीड टू थिंक अबाउट एज कि मैंने कुछ प्रोड्यूस किया और जो प्रोड्यूस किया उसकी वजह से मुझे प्रॉफिट्स होंगे, तो दैट मीन्स आई एम फीलिंग सेटिस्फाइड, सो आई एम फीलिंग लाइक हैप्पी. सो कोई भी बिजनेसमैन है कभी भी बिजनेस करेगा, दिस आई गेस यू पीपल ऑलरेडी डन इन द बिजनेस. सो लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस इज ऑलवेज प्रॉफिट. सो सिमिलरली प्रोड्यूसर, अगर प्रोड्यूसर क्या होगा, बिजनेसमैन ही होगा. सो बिजनेसमैन जब भी कोई चीज प्रोड्यूस करेगा तो वी कॉल इट एज दैट पर्सन इज प्रोड्यूसर. एंड जब वो प्रोड्यूस करने पे उसको प्रॉफिट्स होंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट्स होंगे, तो वी कॉल दैट इज द स्टेज ऑफ equilibrium for producers. So that is the stage of producers equilibrium. Fine. Now let's move on to the second point now. Like a consumer, producer aims to maximize his satisfaction. तो producer को maximum satisfaction कब मिलेगी, जब उसके पास ज्यादा से ज्यादा profit होगा, जब उसके पास ज्यादा से ज्यादा account में पैसे आएंगे. ठीक है. But a producer's satisfaction is maximized in terms of profit. So same चीज मैंने आपको already बता दी है. So this chapter deals with determination of a level of output which yields the maximum profit. अब इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है, हमने ये पढ़ना है किस लेवल ऑफ आउटपुट पे प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है. बढ़ाने पे मिल रहा है, कम करने पे मिल रहा है, कब मिलेगा उसको प्रॉफिट. तो जिस लेवल ऑफ आउटपुट पे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है, दैट इज द स्टेज ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम. फाइन. So that is the stage of producers equilibrium. Now अगर हम profit की बात करें तो what is profit, that also comes in your mind. So let's move to the next slide and let's understand what is profit. So let's understand the word profit. Now meaning of profit. Profit क्या होता है simple words में, gain. मैथ्स में आपने पढ़ा है gain. So what is a gain, जिसका cost price क्या हो, कॉस्ट प्राइस क्या हो, कम हो, एंड सेलिंग प्राइस क्या हो, ज्यादा हो. ठीक है. अब द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस हम लोग क्या कहते थे, दैट इज अ गेन, दैट इज प्रॉफिट. फाइन. सो डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस माइनस, अगर हम करें सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सो इन दैट केस वट एवर द डिफरेंस वी आर गेटिंग, दैट इज प्रॉफिट और गेन. सो अब इकोनॉमिक्स में प्रॉफिट की डेफिनेशन क्या है, देखिए सेम है. So profit refers to the excess of receipts from the sale of goods over the expenditure incurred on producing them. तो similarly जो cost of production है उसका difference, और जब वो sale का जो selling price है उसमें selling price मतलब जो हमने selling price receive किया, ठीक है, goods बेचने पे, ठीक है, और cost of production जो थी उसमें जो difference हुआ, that we call it as profit. Clear है now? आई फील दैट इज क्लियर टू यू. अब यहाँ पे दो चीजें हमें समझनी है, टू मोर वर्ड्स आते हैं. व्हाट इज कॉस्ट, व्हाट इज रेवेन्यू. ठीक है. जब भी हम कोई मनी की फॉर्म में रिसीव करते हैं कोई भी मतलब प्राइस, जैसे हम लोग कहते हैं, मैंने मेरे पास सपोज मुझे गुड़ बनाना था, ठीक है, तो मैंने 1 kg गुड़ बनाया और उसको बेच दिया मार्केट में. अब वो बेचने पे जो मैंने अमाउंट ऑफ मनी रिसीव किया, वी कॉल इट एज रेवेन्यू. व्हाट वी कॉल इट एज, दैट इज रेवेन्यू. व्हाट इज दैट, दैट इज रेवेन्यू. सो नाउ सी व्हाट वी हैव रिटन हियर. ठीक है. सो रेवेन्यू का समझ आ गया, व्हाट इज दैट. नाउ अगर प्रोडक्शन करनी है हमने किसी चीज़ की, तो उसके लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए हमें पैसा चाहिए. तो जो भी हमने पैसा स्पेंड किया है एक पर्टिकुलर गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, रॉ मटेरियल बाय करने के लिए, लेबर की जो कॉस्ट है उसको बेयर करने के लिए, सो वी कॉल इट एज द कॉस्ट. व्हाट इज दैट, दैट इज कॉस्ट. नाउ द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू, again selling price, so revenue and
cost is known as profit. So I hope this is clear to you, and still I'm giving one more example for this. For example, if a firm sells goods for rupees 10 crores after incurring an expenditure of 7 crores, so 10 करोड़ का क्या था, हमने सेलिंग प्राइस रखा, ठीक है, चीजें बेची उस प्राइस पे, 7 करोड़ का हमने स्पेंड किया था उस चीज के ऊपर. सो प्रॉफिट्स हमारे पास कितने हैं, 3 करोड़ के. सो दिस इज क्लियर टू यू माय डियर, आई फील दिस इज क्लियर टू यू नाउ. Now let's move to the next slide, and what is in that, let's see. So producer's equilibrium. Now we are talking about the definition of producer's equilibrium in the economics terms. So equilibrium, first let's understand the term equilibrium. Equal, the word equal, that is from the word equal, equilibrium came into existence. Now what is equilibrium? Equilibrium refers to a state of rest. मतलब वो state है जब balance है, state है जहाँ पे कुछ भी मतलब change आने के chances नहीं है, जहाँ change नहीं required है, ठीक है. So a firm that is a producer is said to be in equilibrium when it has no inclination to expand or to contract its output. मतलब जब एक प्रोड्यूसर सोचता है कि वो इक्विलिब्रियम में, मतलब उसको जितने प्रॉफिट्स चाहिए उतने उसको मिल रहे हैं, ना उसको अब अपनी आउटपुट बढ़ाने की जरूरत है, ना उसको आउटपुट अपनी कम करने की जरूरत है, ठीक है, ना ही उसे और कोई चेंजेस लाने हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आउटपुट्स में, ठीक है. सो टू कॉन्ट्रैक्ट इट्स आउटपुट मतलब कम करना, कॉन्ट्रैक्ट हियर मीन्स रिड्यूसिंग और डिक्रीजिंग द आउटपुट, ठीक है. तो जब ये वाली सिचुएशन होगी तो वी कॉल इट एज इक्विलिब्रियम. The state either reflects maximum profits or minimum losses. हम उस स्टेज पे होते हैं जब हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट्स आए, या फिर क्या होता है कि हमें लॉसेस जो हो रहा है बिल्कुल मिनिमम है, ठीक है. तो उस केस में हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज द स्टेज ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम. मतलब बैलेंस है, उसको कोई टेंशन नहीं है कि कल उसकी कंपनी बंद हो जाएगी या कुछ, तो जितना उसको चाहिए उतना उसको मिल रहा है, ठीक है. हैप्पी किसके केस में होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट्स है तो ऑब्वियसली अगर हमारे पास ठीक ठाक पैसे भी है तब भी हम लोग ठीक फील करते हैं. बट व्हेन वी आर इनटू द लॉसेस देन ऑब्वियसली वी आर नॉट इनटू द equilibrium point. Now let's discuss the main definition for producers equilibrium. So producers equilibrium refers to that price and output combination. प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम में क्या आता है, एक तो प्राइस आता है, पी इंटू क्यू करते हैं हमेशा हम लोग जब भी निकालते हैं, ठीक है. सो प्राइस एंड आउटपुट का वो कॉम्बिनेशन जो क्या करता है, ब्रिंग्स मैक्सिमम प्रॉफिट टू द प्रोड्यूसर एंड प्रॉफिट डिक्लाइंस एज मोर इज प्रोड्यूस्ड. देखो सिंपल चीज है, जब ज्यादा लोग वही सेम चीज प्रोड्यूस करेंगे तो ऑब्वियसली कंपटीशन राइज करेगा, कंपटीशन राइज करेगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली हमें अपनी चीज बेचनी पड़ेगी दूसरे कंपटीशन में कम प्राइस पे. जब कम प्राइस पे चीज बेचेंगे तो ऑब्वियसली हमारे प्रॉफिट्स डिक्लाइन होंगे. आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है. सेम है जैसे आप लोग नहीं पढ़ते हो, दूसरा बच्चा पढ़ रहा है तो आपको पता चलता है जब वो भी पढ़ रहा है तब उसके मार्क्स आ रहे हैं तो आपको वो मिसलीड कर रहा होता है, ठीक है. तो जब आप भी पढ़ना स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो तब जो दूसरा वाला होता है उसकी इमेज थोड़ी डाउन चली जाती है. तो सिमिलर इज द केस विद द प्रॉफिट्स, ठीक है. सो प्रोड्यूसर्स क्या करता है, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम रेफर्स टू दैट प्राइस एंड आउटपुट, वो प्राइस और वो आउटपुट का कॉम्बिनेशन है जिसमें क्या है, उसको मैक्सिमम प्रॉफिट्स मिल रहे हैं टू द प्रोड्यूसर एंड प्रॉफिट डिक्लाइंस एज मोर इज प्रोड्यूस्ड. सिंपल चीज है. जब तक हम लोग कहते हैं एक बंदा पढ़ रहा है, ठीक है, तब तक उसके लिए प्रॉफिट है मार्केट में. जब सारे पढ़ना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, तो उसका जो पहले बंदा पढ़ रहा था उसका प्रॉफिट डिक्लाइन हो गया, उसकी इमेज डाउन होगी, तो उसके कॉम्पिटिटर्स बढ़ गए. सो उस केस में क्या होएगा कि जैसे ही ज्यादा प्रोड्यूस हुआ तो उसके प्रॉफिट्स डिक्लाइन हो जाते हैं. सिमिलर इज द केस विद प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम. सो प्रोड्यूसर जितना ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, उतने उसके प्रॉफिट्स, उसके कॉम्पिटिटर्स आ जाएंगे तो उसके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, ठीक है. सो वो कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट लेना होता है जिसमें क्या होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट हमें मिले, टू द प्रोड्यूसर मिले, ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज
two methods for determination of producer's equilibrium. So I have discussed previously marginal revenue and marginal cost approach. This is very, very important because this is mentioned in the CBSE syllabus. TR and TC approach is also there, but this is not in our syllabus. But I am going to cover this so that you are able to clear your competitive exams. Fine. So this is today I am going to cover. Fine. So I've done the first thing that was important according to CBSE. Now this is important. TR and TC approach is important according to competitive exams. So I'm going to do this with you. And I've not messed it for you. Otherwise, I can skip this, but I've not skipped it so that you are able to do it well in your competitive exams. Now let's move to the next slide. And now there are two situations whenever we talk about producer's equilibrium. We have already covered it yesterday even. So, but I want you to do it again. So I'm just doing it again now with you. So when price remains constant, it is a situation of perfect competition. जब सबका प्राइस सेम रहता है, होमोजेनियस प्रोडक्ट, प्राइस रिमेन सेम, ठीक है. सो परफेक्ट कंपटीशन में कहता है कितने ज़्यादा प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है. सो उनके जो प्राइसेस है वो सिमिलर होते हैं ऑलमोस्ट. प्रोडक्ट भी एक तरह से होमोजेनियस नेचर होता है, सिमिलर टाइप के. जैसे वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ ऑल सोप्स, जितने भी आपके हैं बाथिंग सोप्स जो आते हैं, ठीक है. रिक्सोना हो गया, गोदरेज नंबर 1 हो गया, लक्स इंटरनेशनल हो गया, गंगा, मेनी आर देयर. सो आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल. इनके प्राइसेस ऑलमोस्ट नियर अबाउट ही होंगे. So we call it as perfect competition situation. ठीक है. So in this situation, firm has to accept the same price as determined by the industry. अच्छा, यहाँ पे दो चीजें हमेशा आपको याद रखनी है. Suppose I am talking about firm and industry. Industry हमेशा अगर मैं बोलूँ एक let's give you example कि हमारे पास दो सर्कल है, ठीक है. So one is the bigger circle, another is the smaller circle. Now, when we talk about industry, so it is the bigger circle, and when we talk about firm, that is the circle which is the smaller one, and it is the part of the industry. So अब simple चीज है, हमारे घर के रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन डिफाइन करता है? ऑब्वियसली हमारी फैमिली के जो सीनियर मेंबर्स हैं. तो अब यहाँ पे सीनियर मेंबर कौन है? इंडस्ट्री. सो इंडस्ट्री जो भी प्राइस डिफाइन करती है, बाकी सारी फर्म्स वही प्राइस चार्ज करती हैं, ठीक है. सो दिस इज द सिचुएशन. नाउ इट मीन्स एनी क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी कैन बी सोल्ड एट दैट पर्टिकुलर प्राइस. अब मैं चाहे 10 वो सोप केक्स खरीदूं, ठीक है, तो मुझे प्राइस उसका अगर 25 रुपए है पर सोप केक, तो ऑब्वियसली आई नीड टू बाय विद 250 रुपीज विद 10 सोप केक्स, ठीक है. वो अलग बात है कोई स्कीम आ जाए, कुछ और आ जाए, बट still this is the situation when producer feels he is in equilibrium. This is the case of प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, जब प्राइस चेंज नहीं होगा. अब क्या है, नेक्स्ट केस आता है जब हमने क्या किया, अब लालच हो गया जी. हम लोगों ने क्या किया, उसका प्राइस थोड़ा कम कर दिया. हमने कहा कि दूसरे की सेल्स कम कर दे यार. अब हम लोग क्या करें, थोड़ा जो वहां पे परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, फेयर कंपटीशन देते हैं. इम्परफेक्ट में क्या होता है, फेयर कंपटीशन नहीं देते हम लोग. मैं कहती चीटिंग कर लो. सो सबसे बेस्ट एग्जांपल देती हूँ. 3 इडियट्स वाला जो कंसेप्ट था, वो चतुर जो होता है वो सबके आगे वो पढ़ने से रोकने के लिए, उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो क्या करता है, उनके आगे वो मैगजीन्स फेंक के जाता है, so that they will be out of the competition. So what is that? That is imperfect competition. अब यहाँ पे क्या होता है, I just give you one example, ठीक है. फोटोकॉपी, ठीक है, जेरोक्स जो हम लोग करवाते हैं, ठीक है. सो इट हैपेंस इम्परफेक्ट कंपटीशन के क्या होता है, ठीक है. मतलब अगर जलंधर में, आई कैन गिव यू वन एग्जांपल, जलंधर में जितने भी फोटोकॉपी वाले हैं, सो 1 फोटोकॉपी के लिए वो दे आर चार्जिंग 1 रुपी. अगर आई कैन जस्ट चार्ज like 50 paisa for 1 copy of this xerox of one paper. So in that case, what will happen? People will come to me now. But what I am doing, I am just doing something which other producers are doing, which other people are doing, which other shopkeepers are doing. So I am not
dealing with their rules and regulations, but I am just creating my rules and regulation and give them imperfect competition. So in this situation, firm follows its own pricing policy. अब पूरी की पूरी जो जलंधर में जितनी भी शॉप्स हैं उसको हम लोग मानेंगे, जेरोक्स की जो शॉप्स हैं उनको मानेंगे हम लोग इंडस्ट्री, एंड जो मैंने अपनी एक शॉप की बात करी है दैट विल बी अ फर्म। ठीक है, उस फर्म को अगर हम देखें तो फर्म फॉलोज इट्स प्राइसिंग पॉलिसी। तो मैं अपनी मर्जी से अपने 50 पैसे लगा रही हूँ, बाकी सारे 1 रुपया लगा रहे हैं। सो इसमें क्या होगा, मेरी सेल्स तो बढ़ जाएंगी, ठीक है, बट किस वजह से बढ़ी है, by reducing the price. So what is that? This is also the situation when producer feels he is in equilibrium state. ठीक है, so two different situations. I hope these are clear to you. Now let's move to the next slide, that is total revenue and total cost approach, TR and TC approach. So now let's talk about this in detail. A firm attains the stage of equilibrium when it maximizes its profits. So मैंने ये बताया आपको, वही मैक्सिमम खुशी कब मिलती है, जितने ही हमारे अकाउंट में पैसे हो। तो प्रोड्यूसर को खुशी कब मिलेगी, when he will be having maximum amount of money with him, so that money will be always earned with the help of profits. So when he maximizes difference between TR and TC, now total revenue is the price which they are getting after selling the product, and total cost is the cost which he or she has uh, like pair at the time of production of these those products. So fine, so this is the point. After reaching such a position, there will be no incentive for the producers. Producer के लिए कोई incentive नहीं होता, ठीक है, to increase or decrease the output, and the producer will be said to be at equilibrium. So producer को ना हम increase करेंगे output, ना हम decrease करेंगे उससे. So we call the producer is in equilibrium situation. According to TR and TC approach. Now this is the definition. This is a statement. They can ask you simply the statement in the exam. So let's do that. So according to TR and TR TC approach, producer's equilibrium refers to the stage of that output level at which the difference between TR and TC is positively maximized. जब TR and TC का जो difference है, ठीक है, वो positively maximized हो, and total profits fall as more units of output are produced. जब ज़्यादा से ज़्यादा units क्या है, जब हम produce करेंगे तो तब क्या होगा, उसके profits जो है वो fall करने start कर देंगे, ठीक है। अदरवाइज जो TR एंड TC का जो डिफरेंस है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। नेक्स्ट आता है, सो टू एसेंशियल कंडीशंस फॉर प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम according to TR and TC approach are, first thing is जो difference है TR and TC का वो positively maximize होना चाहिए, positive रहे और maximized रहे, ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। दूसरी सिचुएशन है total profits fall after the level of output. जो टोटल प्रॉफिट्स है जब हमने लेवल ऑफ आउटपुट में क्या किया, बढ़ा दिया, इंक्रीज किया, ठीक है। तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, टोटल प्रॉफिट्स फॉल आफ्टर द लेवल ऑफ आउटपुट। तो वो जो आपके प्रॉफिट्स है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। सो दिस इज द सिचुएशन, टू सिचुएशन दैट कम्स अंडर TR एंड TC अप्रोच. So now let's move to the next slide, that is, now the next thing is producer's equilibrium when price remains constant. When price remains same at all levels, constant means same, change नहीं आएगा यहाँ पे कोई भी, ठीक है। So same at all levels of output. जैसे कि we have already covered perfect competition. Perfect competition is a situation, market की situation है जहाँ पे large number of buyers and sellers are there. So the product is of homogeneous nature, मतलब almost similar nature का product होएगा, prices भी almost similar होएंगे। यहाँ पे free entry and exit of firms होता है, ठीक है, firm, तो प्राइस जो है इंडस्ट्री डिसाइड करती है, उसी के बेसिस पे वो सेम प्राइस चार्ज करते हैं। सो दिस इज अ सिचुएशन। सो यहाँ पे क्या होता है, ईच प्रोड्यूसर एम्स टू प्रोड्यूस दैट लेवल ऑफ आउटपुट एट विच ही कैन अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट्स।
यहाँ पे प्रोड्यूसर व्हाट ही वांट कि मैक्सिमम हिज प्रॉफिट्स उस लेवल तक प्रोड्यूस करेगा, उस लेवल तक आउटपुट प्रोड्यूस करेगा जिस लेवल तक उसको मैक्सिमम प्रॉफिट्स मिलेंगे, ठीक है. सो दैट मीन्स that is when difference between TR and TC is the maximum, that is produces equilibrium when price remains constant. So this is the point. Now let's move to the next slide, that is schedule for producers equilibrium. So there are, if you can see here, we have got units of output, and the first thing which we have to prefix is the price, that is 10 rupees per unit. 10 rupaya. Rupaya is the new like currency denomination which we are using for India. But I was not having the option, so I've just mentioned RS, that is rupees. Fine. So, but it is, I'm just mentioning here rupaya, that is the word. Output units. So if I talk about the output units, I've got 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So you can see the fourth is very highlighted one, and this is the fourth unit will be the producer's equilibrium, where we are getting producer's equilibrium. The price we have already prefixed, that is 10. So price and AR, we have done it in the previous also chapter even. So price and AR, that is similar. So average revenue is similar. Now इसी के basis पे P into Q किया तो we are able to find out TR. So 0 को 10 से multiply किया तो we got 0. So 10 into 1 किया तो it will be 10. 10 into 2 किया तो it will be 20 for TR. Then 3 into 10 किया it will be 30. Then 4 into 10 किया तो 40. So 5 into 10 किया तो it will be 50. 6 into 10 किया तो it will be 60. So I hope this is clear to you. Now next we have TC. So total cost we need to take it ourselves. ठीक है. So total cost for first unit, for 0 unit is 5. कॉस्ट तो हमें लगानी पड़ेगी किसी भी हालत में. So यहाँ पे 0 इसलिए नहीं हमने लिया, ठीक है. So it will be 5. Then for first unit it is 8, then second unit it is 15, then third unit it is 21, then fourth unit it is 31, then for fifth unit it is 42, then for sixth unit it is 54. So we have done the situation when profits are maximizing, TR and TC are maximizing. So you can see the difference between TR and TC, that is maximized, and ठीक है, प्रॉफिट्स जो है राइज करेंगे विद आउटपुट जितनी हम लोग यूज करेंगे. सो प्रॉफिट राइजेस विद इंक्रीज इन आउटपुट, ठीक है. सो टीसी का पॉइंट आएगा 5, 8, 15, ठीक है. सो 21, 31, 42, 54. Now the next values for TC is 42 for the fifth unit, and for the sixth unit it is 54. Now how we have to find out, the formula is already written here, how we have to find out the profit. So TR minus TC, that is minus 5 for the first unit. So you can see 0 is the value for TR and minus TC, that is 5. So answer will be minus 5. Similarly, we are able to find out the values for next units. So next for 10 minus 8, it will be 2. Then 20 minus 15, it will be 5. 30 minus 21, it will be 9. 40 minus 31, it will be 9. 50 minus 42, it is 8. 60 minus 54, it is 6. So you can see the remarks over here. So for first 3 units, 0 to 3 units, प्रॉफिट राइजेस विद इंक्रीज इन आउटपुट. देखो आउटपुट बढ़ रही है, साथ साथ में हमारा क्या हो रहा है कि प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे हैं, ठीक है. माइनस में पहले था, उसके बाद पॉजिटिव हुआ, फिर पॉजिटिव आता रहा, ठीक है. देन फोर्थ यूनिट इज द स्टेज वेयर वी कैन सी आफ्टर दिस पॉइंट, 2 पॉइंट्स ऐसे होंगे यहाँ पे जब भी हम लोग प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम निकालेंगे, वो दो सेम वैल्यू वाले होंगे, पर एक यूनिट ऐसा होगा जिसकी जो है वैल्यू उसके बाद क्या होगी, जो प्रॉफिट्स है वो फॉल करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है. सो वी कॉल this is the point of producer's equilibrium. So you can see the darker one. So producer's equilibrium is at the fourth unit of output. So got the point.
So producer's equilibrium, here profit is equal to 9 and that point is your producer's equilibrium point. Now let's move to the next slide, that is the next slide is explanation of schedule to previous table. So see, the maximum profit of rupaya 9 can be achieved by producing either 3 units or 4 units, but the producer will be at equilibrium at 4 units of output, because at this level both the conditions of producer's equilibrium are satisfied. The first thing is producer is earning maximum profit, that is of rupaya 9, and second is total profit falls to rupaya 8 after 4 units of output. Now let's move to the next slide. So this is clear from the table. I have already explained you table 11. Now let's move to the next slide. So diagram for producer's equilibrium, you can see the diagram for this. So TC and TR approach. TR is always upward sloping. So you can see there. Now your TC approach is little bit, it will be little bit like we can say in the form of S shape. We can say that this is into the form of tangent. It will be parallel to, by making parallel to TR when we are creating any tangent here. So this is the thing. Next is you can see in figure, the given figure. So producer's equilibrium will be determined at OQ level of output, at which the vertical distance between TR and TC curves is the greatest. So vertical distance जो होएगा TR and TC में maximum होगा यहाँ पे, ठीक है. At this level of output tangent जो है हम create करेंगे TC के ऊपर, ठीक है. So TC को करके उसके बाद हम लोग पैरेलल करेंगे TR के साथ. I've already explained you this. So points are given. GH जो है that is the difference. Fine. So is distance, that will be just maximum. So you can see here. Now at quantities smaller or larger than OQ, such as OQ1 or OQ2 units, the tangent to TC curve would not be parallel to the TR curve. So the producer is at equilibrium at OQ. So you can see the point OQ. So at this point the producer is at equilibrium. So maximum profit will be GH. So that is the value they are giving for profit. So the producer is at equilibrium in OQ, जो आपकी line आएगी, ठीक है. So this is the point. Now let's move to the next slide, where producer's equilibrium when price falls with rise in output. So दोनों situation, this is the second situation. So when price falls with rise in output, जब हमने output के units बढ़ा दिए, imperfect competition का जो हमने case किया था, so price क्या करेगा, हमने fall कर दिया and output के units increase कर दिए. So उस time period में किस वजह से करता producer, इसलिए करता है aims to produce that level of output at which he can earn maximum profits. इसलिए करता है कि बाकी सबके profits कम हो जाए और हमारे maximum profits हो जाए. So that is when difference between TR and TC is the maximum. So difference between TR and TC में maximum हो जाए. Now let's move to the schedule related to this. So here is the schedule for producer's equilibrium. So here you can see output units are given 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So next is given to you 10, price is given as 10, then 9, then 8, then 7, then 6, then 5, then 4. So when we multiply P into Q, it will be equal to TR. So 0 into 10, that will be 0, 1 into 9, it will be 9, 2 into 8, that will be 16, 7 into 3, it will be 21, 4 into 6, it will be 24, 5 into 5, 25, 6 into 4, it will be 24. Now TC is as usual, that is given to you. So TC is 2, 5, 9, 11, 14, 20, 27. Now profit is equal to TR minus TC rupees. So यहाँ पे आता है -2, 0 में से 2 minus किया तो it will be -2, 9 minus 5 it will be 4, so 16 minus 9 it will be 7, then 21, 11 minus 21 minus 11, that will be 10. So this is the first stage. So here you can see profit rises with increase in output. Now the next point also, 24 minus 14, it will be 10. So this is the stage of producer's equilibrium. After this, profits start declining. Fine. So you can see that as the output is increasing, the profits start declining.
With rise in output, so profits start declining. So you can see there is value for next is 25 minus 20, it will be 5. 24 minus 27, it is minus 3. So profit falls with increase in output, that is the point. Now let's move to the next slide. Explanation of schedule for producers equilibrium. As seen in previous table, producers will be at equilibrium at 4 units of output because at this level both the conditions of producers equilibrium are satisfied. So इस condition पे producers equilibrium जो होगा वो satisfied हो जाएगा. Next is first point. Producer is earning maximum profit of rupees 10. So यहाँ पे producer जो है maximum profit कितना earn कर रहा है 10. So total profits fall to रुपया 5 after 4 units of output. So यहाँ पे क्या है जो आपका जो profits है उसके बाद fall करना start करता है 4 यूनिट के बाद. ठीक है. Now let's move to the next slide. So diagram for producers equilibrium you can see now according to when price falls with rise in output. So यहाँ पे ये कुछ I can say कैंडी को अगर रैप कर दो तो काइंड ऑफ दैट पिक्चर बनी हुई है. ठीक है. जब गिफ्ट रैप कर दिए हम लोग तो काइंड ऑफ दैट बनेगा हमारा. ठीक है. So TR and TC is given on y axis. On x axis that is units of output. So you can see the figure, producer's equilibrium will be determined at OQ level like we have already done. So यहाँ पे जो distance होगा वो इतना ज़्यादा नहीं है, greatest होगा मतलब as compared to the previous situation उतना नहीं होगा. Vertical distance between TR and TC curves जो होगा वो maximum होगा. ठीक है. At this level of output tangent हम लोग draw करेंगे TR curve के ऊपर. ठीक है. उसका हम नाम देंगे that is H and is parallel to tangent to TC curve at point G. So at point G you can see that is again the next tangent. So difference between both the curves represented by GH again. So this is maximum. So this is the point of producer's equilibrium. ठीक है. उसको बाकियों के कंपैरिजन में थोड़ा सा भी अगर प्रॉफिट ज्यादा हो गया तो that person is in equilibrium. So let's now move to the next slide. Now the next thing is gross profits are maximum at point of producer's equilibrium. Now for this purpose we need to understand what is gross profit. So let's discuss about this. We will discuss first with the help of MC and MR approach. So according to MC MR approach, producer's equilibrium refers to stage of that output level at which MR is equal to MC. जब हमारा MC and MR दोनों equal हो जाएंगे so उस point को हम लोग producers equilibrium की first condition बोलेंगे. Then MC curve cuts MR from below. This is going to be the second situation, second condition. Fine. It means in figure 8.5 हम लोग next जो है उसमें स्लाइड में करेंगे फिगर. ठीक है. सो 8.5 producers equilibrium will be determined at point K corresponding to OQ level of output. So let us prove that gross profits are maximum at point K and any output level below or above point K would mean lesser profits. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर K पॉइंट से अगर कोई भी हमें प्रॉफिट्स कम मिलते हैं, ठीक है, लेट अस प्रूव दैट ग्रॉस प्रॉफिट्स आर मैक्सिमम, ग्रॉस प्रॉफिट्स ज्यादा होते हैं तो पॉइंट के पे होंगे, एट पॉइंट के. ठीक है. उससे नीचे कोई भी पॉइंट आ जाएगा तो वी कॉल इट एज लेसर प्रॉफिट्स. ठीक है. सो ग्रॉस प्रॉफिट्स हमेशा मैक्सिमम होंगे, ये मान के चलेंगे जब प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम की बात करते हैं हम लोग. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. So according to the TR-TC approach, producer's equilibrium is determined when. So there are two conditions and you can see the diagram here, figure 8.5. So we can see there is revenue and cost that is shown on y-axis and on x-axis we can see the units of output. Fine. So gross profit is the situation I told you at the K point. Fine. So OQ is the area for gross profit. Fine. So we have mentioned with this. Now gross profit को पता कैसे चलेगा? So the first thing is difference between TR and TC is maximum. The first point is difference between TR and TC is maximum here. ठीक है. दूसरी चीज आएगी
difference between TR and TVC is maximized as TC includes TFC, which remains same at all levels. The difference between TR and TVC is termed as gross profit. So again, you have to understand this. जब total revenue and total variable cost में difference आएगा तो we call this as gross profit, maximum profit. ठीक है, so hence producers equilibrium refers to that level of output when gross profits are maximized. So producers equilibrium तब आएगा, उस level of output पे आएगा जब हमारे पास maximum profits होंगे. Is that clear to you? Now let's move to the next slide, that is from the previous chapters we know क्या क्या पढ़ा था हमने. Area under MR curve is always equal to TR. The first thing which we had read in the previous chapters, that is area under MR curve is equal to TR. तो बेटा इसके नोट्स आपने प्रॉपर बना के लिखने हैं. ठीक है, ये आपका जो लास्ट फिगर हमने अभी देखा है, सो उसी के बेसिस पे 8.5 जो फिगर था उसी के बेसिस पे हम लोग सारा ड्राइव कर रहे हैं. नेक्स्ट इज एरिया अंडर MC कर्व इज इक्वल टू TBC. सो अगर एरिया जो है TR का एंड MR का सेम है, ठीक है, इक्वल होएगा, सो MC का और TBC का एरिया भी इक्वल होगा. सो कॉरेस्पॉन्डिंग टू OQ लेवल ऑफ आउटपुट्स, you can see the previous figure. So TR is equal to OQ KP, area under MR curve, and TBC का क्या आ जाएगा, area under MC curve. दोनों को लेके हम लोग ज्वाइन कर देंगे तो what will be the gross profit? That will be NKP. So OQ KP minus OQ KN. So that will be the gross profit. So उनमें से माइनस करके आपके पास आ जाएगी वैल्यू. Fine. It means the difference between TR and TBC is maximum at point K. Any output level below or above point K would mean lesser profits. Now we have to prove that NKP is the maximum gross profits. So let us prove this with considering 2 points R and T. So अगर first point को हम लोग R लेते हैं तो let's see TR is equal to OQ1 RP and TBC is equal to OQ1 SN. ठीक है, so gross profit क्या आ जाएगा, OQ1 RP minus OQ1 SN. So answer will be NSRP, that is the gross profit point. ठीक है, it is clear from the previous diagram that NSRP less than NKP. So gross profit at point R is less than gross profit at point K. So it is clear from the previous diagram that NSRP less than NKP. So gross profit at point R is less than gross profit of K. So R का जो profit है वो कम रहेगा as compared to K, point K. ठीक है, now let's talk about point T. ठीक है, so at point T, TR is equal to OQ2 TP and next value for TBC is OQ2 LN. So gross profit will be NKP minus, so दोनों की वैल्यू लेके उस हिसाब से करना, NKP minus KTL. ठीक है, so still gross profits are less then NKP, so उससे कम हो गया. So finally it can be concluded that gross profits are maximized at point K corresponding to the OQ level of output. So with this your full chapter 8 is finished and I'll give you now MCQ for this chapter as well as answer key for the previous questions which I've given yesterday. So I'll post it that for you for the weekend work. So answers for this chapters, answer key for this chapter, MCQs, that I'm going to post it on Saturday. So my dear students, I hope you are doing well at home and even I feel you are doing your best for learning economics at home. So my dear students, please do well and study hard at home. So whenever you feel you need my help, so my WhatsApp number is always with you. Even I give you call after, like I'm giving call randomly to all my students and ask what are the doubts they are facing. So my dear students, I would say
in the last, there are some questions that you need to do it at home. So let's see what are the questions that we have covered today. So let's discuss. So questions to be done for today. The first is, what is meant by profit? That you need to write. So profit की definition लिखनी है. We have already done it. ठीक है. Then what are the two methods for determination of producer's equilibrium? That you already know. TR and DC approach and MR and MC approach. Next is, what is meant by equilibrium output of a producer? So you need to explain equilibrium output प्रोड्यूसर के लिए कौन सी होती है. ठीक है. देन एक्सप्लेन प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. सो डायग्राम की हेल्प से यू नीड टू एक्सप्लेन प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम. सो विद बोथ द केसेस दैट आई टोल्ड यू, विद price remains constant, and other is when price falls with increase in with rise in output. So that you need to explain with both the diagram schedule. Fine. So next thing, the last point is, explain the gross profits are maximum at points of producer's equilibrium. So you need to explain the statement with details. So with diagram, with all the mathematical approach. So with this, I can say you need to do these all these work, and in the end, I would say thank you to my dear students. I know you people are already preparing well and you're doing good at home, and even you are taking care of your health, and I hope you will be staying happy and healthy at home, and even you're taking care of your parents. Still, if you are feeling there is any doubt regarding your economics subject, fine. So you can you can leave a message to me, or you can give me a call. I'll be available to you, and I'll help you whenever you will ask for your doubts. Fine. And one more thing I can say, doubts are always with those people who try to understand the concept, and having doubts is not a bad thing. Fine. So I feel like very happy to take your doubts. So my dear students, you can ask your doubts. So thank you so much. God bless you. Stay happy, stay healthy, and enjoy learning at home. So we are always with you. So Cambridge International School, the SUA is always with you. So at the time of need. So thank you so much.